Major, I want to talk briefly about the enemy, the terrorists themselves, and especially about Lashkar-e-Taiba. The encounter that you had that led to your injury was against, I think, 4 or 5 of Lashkar-e-Taiba terrorists. And recently, when I was reading up about some of the post-Pahalgam analysis, I came across this expert. I forgot who it was. I would have named him otherwise. But he was talking about how the Lashkar-e-Taiba, unlike let's say a Jaish-e-Mohammed, is almost like the paramilitary wing of the ISI and the Pakistani army because of the level of integration it has with the Pakistani army. Whereas the Jaish is most kind of independent. They have their own training centers, they have their own sources of funding. But the Lashkar is properly directly backed by the Pakistani army, trained by the Pakistani army, which is very, very important, especially about what happened in Pahalgam, because that person's take was that for anybody, even if you're a terrorist, for you to be able to shoot people at point blank range, that requires another level of indoctrination that is usually not there among, let's say, terrorists of the Jaish-e-Mohammed. Now, your service obviously was, over a decade ago, but you've had experience in Jammu and Kashmir. You've had face-to-face encounters with terrorists. I'm not sure if you ever came across terrorists of the Jaish-e-Mohammed, but would you agree with this analysis? And can you tell us more about a Lashkar's level of training? Because लोगों के दिमाग में इट्स जस्ट कि हाँ ये तो टेररिस्ट है, मतलब दे कैन हमारे फौज करने कुछ भी नहीं होंगे. बट you also have to see that as an officer, as somebody who's been a soldier, how do you assess their level of training? Okay, so you rightly brought out, this is a very important point. So primarily there have been only 3 groups, terrorist groups. So one is Hizbul Mujahideen, HM, then Jaish-e-Mohammed, and then Lashkar-e-Toiba. Now, they differ in ideology, they differ in their cadres, they differ in their training, and they differ in their modus operandi. Okay, the first encounter ever in my life was with Jaish terrorist. So I've seen them. Then mostly I've been in North Kashmir. So most of the encounters that I had were with the Lashkar guys and some with the Hizbul guys. तो एक बात ना, मतलब डिफ्रेंशिएट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ हिजबुल वाजा जो होगा, दैट्स अ कश्मीरी गाय मोस्टली. Very few Pakistanis, mostly all Kashmiris, and they would mostly be seen in the South Kashmir area. So now when this Pahalgam thing happened and they were Lashkar guys, they would have come in somewhere from North Kashmir. This is what I'm thinking. Maybe they came from somewhere else. Now the Lashkar guys, as you rightly said, they are mostly Pakistani. They are directly controlled by ISI, directly by Pakistan Army. Like in the news I was seeing there's कोई तो फौजी था स्पेशल फोर्सेस का पाकिस्तान का, वन ऑफ दोज गाइज. नाउ वो स्पेशल फोर्सेस वाला बंदा क्यों था साथ में? दैट वाज टू कीप द ग्रुप. दे वुड हैव बीन ट्रेन टुगेदर. नाउ देयर टैक्टिक्स इज मोर लाइक अ फौजी टैक्टिक्स. सो होता है ना, मतलब लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई एम गोइंग विद माय फौज and I'm ambushed, I'm a Fauji, I'll do a counter ambush. Right. I'll not run away. Same thing is done by the Lashkar guys. Okay. You kill one of our guys, we are not going to spare you. You kill one of the Lashkar guys, they'll try and come back to you. So now the number of operations has gone down drastically, but till the time I was there, like when we killed these Lashkar guys, we were told, like they'll try and do a standoff attack, they'll try to do something funny, be prepared, be prepared, be prepared. So those kind of things. So we used to change our tactics. Okay, let them come. So we are ready for them. So ये वाला ना difference आप make out कर लेते हो. Like जैश वाला जो आएगा, he is totally isolated. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कश्मीर से और कश्मीरी से. उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. He comes for a task. He exploits whatever he can. Whether it's resources, whether it's money, whether it's Kashmiri people, whether it's any guy, security forces who's not very attentive, right? So they'll try to exploit all the opportunity that they give, whether it's Kashmiri women. Jaish is number 1 in exploitation. Now when you come to Lashkar, now Lashkar does not have any love lost. पाकिस्तानी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता. उसके माइंड में है कि कश्मीर में तो बहुत प्रॉब्लम हो रही है. Now these Lashkar guys, there are 2 categories. So one are those जो अपने आप को बोलते हैं हम गाजी हैं, so who have traveled multiple times, so funny characters. So those will be there, and under them there will be some younger guys.
दोज गाइज विल कम एंड उनको देयर इज नो लव लॉस्ट. उनको बोल दिया इसको मार दे, वो औरत है, बच्चा है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता. बट ऑन दी अदर एंड जो हिजबुल वाला है वो थोड़ा सा सोचेगा नहीं ये मेरा कश्मीरी है, ही हैज़ दैट काइंड ऑफ अ फील, ये मेरा नेबर है, ये मेरे खानदान का है, मैं लोकल को नहीं मारूंगा. सो हिजबुल गाइज, यू विल सी वेरी लेस हिजबुल गाइज इनटू सुसाइड बॉम्बिंग्स एंड दीज काइंड ऑफ अटैक्स. हिजबुल गाइज आर वेरी लेस. दे विल कम एंड डू इट इन दिल्ली, बट वहां कश्मीर में नहीं करेगा वो हिजबुल वाला. ठीक है, तो उसका माइंडसेट इज लाइक दैट. वो किसी चीज से परेशान होके गया. एंड व्हेन यू लिसन टू दी स्टोरीज, हिजबुल वाले लड़के से पूछोगे क्यों भाई तू क्यों भागा, वो साहब मेरी गर्लफ्रेंड की शादी उसने कर ली. अबे तो यार दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेता, मतलब यू डोंट हैव टू पिक अप अ गन, यू इडियट. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. साहब मैं बहुत गरीब हूं इसलिए चला गया. अबे तो दिस इज नॉट अ जॉब, यू विल गेट किल्ड. एंड दीज आर द गाइज ऑन विच यू नो सम सीनियर कमांडर्स हैव रियली स्पेंड टाइम कि उनको रिहैब कराओ, उनको सरेंडर कराओ, उनके पेरेंट्स से बात करो. सो दोज काइंड ऑफ गाइज. सो आई थिंक व्हेन इट कम्स टू हिजबुल, दिस सरेंडर थिंग इज फाइन, इट्स गुड. हमारे अपने भाई हैं वो, उनको ठीक है ब्रेन वॉश हो गया था, अभी ठीक करो उसको, राइट. बट लश्कर एंड जैश, आई थिंक देयर इज ओनली वन ट्रीटमेंट फॉर देम, जस्ट नॉक देम ऑफ. बिकॉज दीज गाइज आर लाइक दिस, दे आर डर्टी गाइज, दे डिड दिस इज अ हीनियस क्राइम. इनोसेंट लोग आए हुए हैं, आप खड़े होकर उनको पॉइंट ब्लैंक ट्रेन से मार रहे हो, आप क्या कर रहे हो. सो वी नीड टू आइडेंटिफाई देम एंड वी नीड टू हैव अ सेपरेट ट्रीटमेंट. हर बीमारी का अलग इलाज होता है ना. सेम गोली किस किस को दोगे, सो गिव देम डिफरेंट.